tracking more in terms of the aftermath of the polls. I'm going to come back to you. Let's tell our viewers, after facing a crushing defeat in the Maharashtra Assembly polls, all does not seem to be well within the Maha Vikas Aghadi alliance. In fact, in a strong attack on the alliance, Congress leader Vijay Wadatiwar stated that he cannot confirm whether the party will remain in its current alliance or not. He mentioned that a crucial meeting will be held in the next 2 days. Listen to what he said. मुझे आज तो हम लोग अलायंस में, मैं कल के बारे में नहीं बता सकता, पर हम लोग अपोजिशन में हैं। हमारी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, जनता के हित की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे, जनता के प्रश्नों को लेकर, सब काम को लेकर हम आगे रहेंगे। यही हमारे हाथ में, वो हम करते रहेंगे। कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट्स जो है वो एनसीपी और यूबीटी में कहीं ना कहीं बंटे हुए दिखे। कैसे देखते हैं, क्या कांग्रेस अपने आप को अलग कर लेगी अभी इस चुनाव के रिजल्ट्स के बाद? नहीं, हम लोग अभी 2 दिन में हमारी मीटिंग होने वाली है, इस बारे में चर्चा होगी। चर्चा के बाद हमें किस दिशा में जाना है, नहीं जाना है, किस रास्ते पर जाना है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन करके निर्णय लेंगे। Now, Shiv Sena UBD spokesperson Anand Dubey responded to Wadatiwar's statement, saying that if you're saying that we're together now but don't know about the future, then we will also say the same. Listen. अगर विजय वडेट्टीवार जैसे बड़े नेता जो विरोधी पक्ष नेता रह चुके हैं, अगर वो ऐसी बयानबाजी करेंगे कि अभी तो हम महाविकास आघाड़ी में आगे का हमें पता नहीं। देखिए विजय जी, ये संकट का समय, पूरे महाविकास आघाड़ी की एक करारी हार हुई है। कुछ गलतियां आपसे हुई होंगी, कुछ हमसे हुई होंगी। ये सामूहिक असफलता है। इस समय एक दूसरे का साथ देने की जरूरत है, हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है। हम बीजेपी को और महायुति को पुनः हरा सकते हैं अगर हम सब एक हो जाएं, हम सब मिलजुल कर रहें, हम सब तटस्थ रहें, काम करें। अगर आप ये कहेंगे कि अभी तो हम महाविकास में हैं, भविष्य का पता नहीं कि हम अकेले जाएंगे कि एक जाएं, तो फिर हमें भी कहना पड़ेगा ना कि अभी तो हम सब साथ में हैं, लेकिन भविष्य का हमें भी नहीं पता। हमने तो 4 सीटें आपसे ज्यादा ही जीती है ना। Nilesh, coming back to you, this is actually not coming in as a surprise, but what is surprising is with the aspect of there's lesser of introspection and more of a blame game in terms of what really went wrong for them. Well, absolutely. We have been witnessing the differences within the Mahavikas Aghadi alliance partners, but it will continue post-election is what is surprising us also, because we have been seeing that how there had been different point of difference, which was wide open into public, the open fight between UBT as well as Congress, and now the blame game continues with the loss that the Mahavikas Aghadi has achieved. So that is what is concerning the Mahavikas Aghadi leaders, because the blame game has begun. Vijay Wadatiwar, senior leader from Congress and LOP, mentions that what lies in the future, will the Mahavikas Aghadi be intact, is what is questionable. And now UBT leader also questioning, or rather taking a jibe at Congress, states that we are bigger party than you. We have achieved more than what Congress has achieved, being a national party, one of the biggest party of the country, but is achieving less than UBT. So this conflict continues, and further, while we are moving for the face of CM, it seems like the Mahavikas Aghadi is still into a debacle when it comes to making a consensus over being in an alliance partner. And will it intensify is what we are also expecting. Right, Nilesh. Thank you very much for getting us the latest. You, of course, clearly have a lot to be tracking, so we're going to keep coming back to you to keep us ahead on those developments. But for the moment, we leave it at that.